हेलो एवरीवन, आज हमारी फ़्लाइट है सुबह बल्कि कल की, आज की नहीं. इट्स 11:30 राइट नाउ. आवर फ्लाइट इज़ एट 6:30 AM फॉर इस्तांबुल. और ना पैकिंग हुई है ना कुछ प्रिंट आउट हुआ है. वी डिडंट इवन नो हमारी फ़्लाइट किस टाइम पे अंटिल नाउ. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हम बहुत अंडर प्रिपेयर्ड हैं. दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ आफ्टर अ बेबी. दिस इज़ व्हाट इट इज़. मैंने एक प्लेलिस्ट लगाई है. दिस इज़ रोड ट्रिप. सो लेट्स सी कैसे गाने हैं इसमें. एंड पता नहीं क्यों मेरा लैपटॉप अभी हैंग हुआ हुआ है. सो आई एम गोना हैव टू रिफ्रेश दिस. सो दिस इज़ माई सूटकेस. लॉल, अभी नुमान का पैक हुआ है. दैट इज़ पैक्ड. हाउ इज़ योर्स पैक्ड? Guys, I've just put this on. By the way, ये हमारी सैम्पल की बॉटल है. This is the first ever sample bottle that we made. And we saw कि ये काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो we obviously changed the sticker and stuff. But yeah, मैंने ये finally लगा लिया है. And I'm just gonna take a shower. काफ़ी सारी चीज़ें पैकिंग हो गई हैं. कमरा थोड़ा बहुत सिमट गया है. I don't think सोने का टाइम है. I'm just gonna shower, do me hair. Guys, we're on the way. We're going. It's so weird not being with Alian. I cried, and the more I think about it, I might cry. But yeah, let's go. Hi. So, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे कि कैसे मैंने टर्की का वीज़ा अप्लाई किया और हाउ यू कैन बुक अ ट्रिप टू टर्की. वेल, इट्स सुपर सिंपल. टर्की का वीज़ा शेंगन के ऊपर अप्लाई किया था. बेसिकली आई वाज ट्रैवलिंग टू यूरोप. तो अगर आपके पास वैलिड US, UK या शेंगन वीज़ा है तो फिर आप टर्की का वीज़ा ऑनलाइन ले सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव दैट देन यू कैन सर्टनली अप्लाई फॉर द टर्किश वीज़ा थ्रू VFS ग्लोबल, which is Jerry's online. कराची में तो उनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है. दे हैव एन ऑफिस एट द बहरिया कॉम्प्लेक्स जो कि गिजरी में है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो ऑनलाइन एंड टाइप अप्लाई फॉर टर्किश वीज़ा थ्रू VFS ग्लोबल. एंड आपको पूरा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं. यूजुअली सिंपल लाइक बैंक स्टेटमेंट, आपकी फ़्लाइट डिटेल्स, आप कहाँ ठहरे हैं और आपकी आइटिनरी क्या है, एंड मे बी ट्रैवल इंश्योरेंस एंड अ वैलिड पासपोर्ट फॉर श्योर. एंड देन यू कैन सबमिट दैट एंड यू कैन गेट द वीज़ा अगर आपका अप्रूव होता है. सो इट्स सुपर सिंपल. यू कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू अदर ट्रैवल एजेंट्स आउट देयर. आई थिंक टर्की इज़ प्रीटी ईजी टू ट्रैवल ऑल ऑन योर ओन. तो आप थोड़ी सी रिसर्च करें ऑन द प्लेसेस टू विजिट एंड प्लेसेस टू गो. And you can definitely do Turkey by yourself because I think travel agents अगर आप book करते हैं they actually end up being more expensive. This is the first meal. I think these are chicken sliders. They look good. Let's have some. My coffee is here. I can't wait to go to sleep. I'm so tired. I'm not sure if I should have this coffee. Look, we're finally going. How does it feel like to not be with Agu right now? Don't remind me. Guys, we have arrived in Istanbul. We are gonna be leaving Istanbul. I mean, not leaving. We're gonna be exiting in Istanbul because हम लोग यहाँ पे एक रात रुक रहे हैं. Which is so exciting. I'm really excited. Washroom break all done. Let's go. I'm so excited. So we have arrived and we are in our hotel. हम पहला हमारा स्टॉप है इस्तांबुल. So we're here. I'm going to show you the room. It's a really nice room. ये होटल जो है it's called the Levni Hotel और ये बिल्कुल सुल्तान अहमद वाला एरिया में है. इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे. I booked it through Agoda. So I'm going to give you a room tour. As soon as you walk in, this is the bathroom. Love it. Very modern, very nice. I took a hot shower. बहुत मज़ा आया. मज़े का था. This is me. बहुत जल्दी से मैंने अपना like face sort out किया है. Because we're gonna have lunch. बहुत भूख लगी है. This is the entry mirror, and then this is our room. There we go. काफी modern सा है, and the best part about it,
is the fact that it has the view of the Galata Tower right there. I have been to Turkey 4 times now, so and every single time, apart from the first one, जो कि मैंने अपनी family के साथ 2012 में किया था, that was like a fully booked travel agent tour. But other than that, जितने भी tours हमने किए, हमने खुद किए, and I felt कि Turkey को navigate करना काफ़ी आसान है because there's so much information available online, and they have good flights coming in and out from Istanbul. अगर आप अंतालिया जाना चाहते हैं, बोर्डरूम जाना चाहते हैं, Trabzon, Cappadocia जाना चाहते हैं, so they have like flights and buses and like stuff available. So I feel like you can do it on your own. Just research before you go. YouTube पे बेशुमार vlogs हैं. I have vlogged my trips as well. I'm gonna leave links to my Turkey travel vlogs. जो अगर आप देखना चाहते हैं, then I have like a detailed basically places to visit in Turkey. एंड इस ट्रिप पे हमारे पास एक दिन था सिर्फ, सो वी जस्ट काइंड ऑफ रोम्ड अराउंड द एरिया जो कि हमें पहले पता था हमारे होटल के करीब थे, जो कि सुल्तान अहमद का एरिया था. सो वी जस्ट डिड दैट. बट इफ़ यू वांट टू सी इस्तांबुल इन मोर डिटेल, देन आई एम गोना लीव अ लिटिल sign here which you can click on and you can watch that. So yeah, I just wanted to basically tell you guys that. Guys, हम आ गए हैं नुमान के स्पॉट पे जहाँ से वो भुट्टा खाना चाहते हैं, क्योंकि हम जितनी भी दफ़ा आए he's always bought a भुट्टा from that particular spot. By the way, हमने लंच में पीड़े खाया और अब हम थोड़ा सा stroll around कर रहे हैं, and then we are probably gonna just like keep eating street food. I don't want to sit at a restaurant and eat. I just want to explore because we're only here for like a day and a half. तो जितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ें, we're doing that. We discovered this restaurant जब हम लोग last year आए थे, and basically हमने इस ट्रिप अभी तक वही किया. We just revisited all the stuff that we did last year, and we're like, oh my god, I remember this. It's nostalgia basically. But ये cat नहीं है. We're actually friends with a guy who works here on Instagram, and he still works there. So we've had our dinner तो नहीं, like हमने चुकी 3 चीज़ें कुछ इधर उधर से खाई. Sat down in a cafe, थोड़ा सा गर्म किया अपने आप को, had a little bit of coffee, and now we are at the terrace of our hotel. And guys, the view, let me just show you. 1 2 3. Love the view. I wish यहाँ की lights खुली होती, then we could have taken like a lot better photos, but हमने जितनी भी आ सकते हैं खाने वाली. We're probably gonna head out क्योंकि हम अपने toothbrush पैक करना भूल गए. So we're just gonna buy some toothbrushes and then get in bed and basically defrost. Guys, we've left the hotel क्योंकि भूख बहुत लग रही थी. But oh my god, it is cold today. So freaking cold. और हमें काफ़ी incline पे चढ़ के जाना है ऊपर, तो बहुत भूख लगी है. I think खाना बहुत अच्छा होना चाहिए. It has to be worth it. What to get. अभी तक हम लोगों को ना ये समझ में आया, एक ये और एक ये. And I'm thinking of getting a soup because it's quite cold. Vibes of this place very nice, very cozy. बिल्कुल हमारे होटल के पास सुल्तान अहमद के एरिया में है. इसका नाम क्या है? It's called Masa. Let's see खाने कैसा होता है. So we've received some hummus with some pita, and I literally cannot wait. So hungry. Guys, our food is here. Having a video call back home. Looks so good. So उस तरफ से, वहाँ से लंबे रास्ते से लेके जा रहे हो हमें. Guys, हमने अपना रात का स्नैक्स का बंदोबस्त कर लिया. इतना फोड़ के आए, फिर भी और खाना लिया है हमने. बहुत मोटे हो गए भाई हम. और नुमान हमेशा लंबे रास्ते से हमें लेके जाते हैं, मगर अच्छा है हमारा खाना हजम हो रहा है. इट्स गुड. हम बुकिंग कर ली है कि बाथरूम पहले मैं जाऊंगी और गरम गरम पानी के नीचे खड़ी हो जाऊंगी बस डिफ्रॉस्ट करने के लिए. और नुमान ने कहा है कि जब तक मैं बाहर निकलूँगी उससे पहले ख्वाब में होंगे. तो आई थिंक वी आर बोथ सॉर्टेड फॉर व्हाट वी वांट आउट ऑफ दिस नाइट. आई डू हैव टू गो एंड पंप. तो ये सीन है. लेट्स गो. आई एम नाउ फाइनली इन बेड. मैंने गरम गरम शावर ले लिया. I do think I did burn my skin a little bit because it was hot. But I'm in bed. हमारा कमरा बहुत ठंडा है.
30 degrees का temperature बता रहा है, but it's still so cold. Gnomes is all tucked up in bed watching a Govinda movie. Gnomes, how's the movie? कौन सी है? पता नहीं नाम क्या. लॉल नुमान बस फेसबुक पे जो रैंडम मूवीज आ रही होती हैं वो देख रहे होते हैं. I'm gonna end this vlog here and I'll see you in my next vlog.